Right, right. Very good. Uh, okay. Now everything is set. Right. Okay. Last lecture, I given you idea about the sign and unsigned numbers. Right. We were discussing about sign numbers. Okay. As I have given you idea about the sign numbers. Right. Uh, Now you have idea that how to represent the positive and negative numbers. Okay. As well as I have given you the series, 8-bit series for that numbers. Okay. आई होप मेरा कुछ लेक्चर में थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था. ओके. अपना वीडियो इमीडिएटली एंड अप हो गया था. आई होप सभी को पॉइंट्स क्लियर हुआ, सभी ने पॉइंट को अंडरस्टैंड किया कि नहीं? यस, एनीवन कैन रिप्लाई मी. यस सर. ओके. एनी डाउट रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर? एनीवन हैव? इफ यू हैव एनी टॉपिक चल रहा था आपने. या बाइनरी सिस्टम का सर हेक्साडेसिमल आपने कांसेप्ट क्लियर नहीं किया था ना, तो आप बोल रहे थे कि अगले लेक्चर में करूंगा. ओके 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 ओके. बाइनरी सिस्टम का हेक्साडेसिमल. ओके ओके ओके. दैट आई एम मेकिंग. ओके ओके. Just I'm sharing the screen. Okay, so you can able to see. Hope you can able to see my screen. Yes sir. Okay. Yes, sir. Right. Now see what I want to tell you. See, 0 and 1 are used for representation of your positive and negative numbers. Okay. So 0 indicate positive numbers and 1 indicate negative numbers. Right. Now what I want to say here, when I write any binary number, okay, so that's why that binary number may be 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, or 64-bit, 128-bit. It depends upon the processor. It depends upon the system, computer system that you are using. Remember, when you talk about the processor, that processor length is important here. Okay, so that's why that length will be telling you here how much amount of data is accepted by that processor. If I say about a 8-bit processor, it accepts a 8-bit data. If I say 16-bit processor, it accepts a 16-bit data. If I say 32-bit processor, 64-bit, 128-bit, in the same fashion, the bit length, the data length is also vary. Okay. Now, but whenever the processor will do the processing, keep it in mind, it is important. Whenever the processor will do the processing, length kitna bhi ho, but it will do accessing of 8-bit data only. It will take 8-bit data, do the processing, and immediately take next one. So in this fashion,
our memories are also built. Our memory system of the computer are also built, right? So that's why here 8-bit data is most prominently adopted. Now, if I show you one example, so one example of 8-bit will be, I say 10101111. Okay, this will be a 8-bit. So if I convert directly this number into a hexadecimal number, I say here it is a A. 1010 is nothing but A, and 1111 is nothing but F. Okay, so that's why here I say AFH will be the hexadecimal number. Remember, I did here binary representation. Okay, as a 10101111, and AF is a hexadecimal representation. Now, when I write binary number, that time 10101111 is enough for writing binary. But when I write a hexadecimal number, then along with that hexadecimal representation, a H is written at the end. H is written at the end. Okay. Most of the cases, most of the computer systems are taking 0x AFH. Okay. So this will be another way of representation. So if you are working with assembly level language, AFH convention is utilized. And if you are working with any another high end like C, C++, Python, or any other PHP, HTML, these languages, that time you can take this type of convention like 0xAFH. H may be smaller, H may be capital. Okay, H may be in small case or H may be in capital case. No problem, there is no issue, but this is a way of representation. Now, I hope these things will be understood. Now I am talking about here, if I have a 8-bit numbers. So here the 8-bit numbers will be starting from 0 to 255. Okay, 0 to 255 if I write in decimal. Okay, if I write in decimal, the series will start from 1 to 256. Okay, if I say in terms of decimal, okay, it will be starting from 1 to 256, and here for binary or in hexadecimal, okay, in binary or in hexadecimal, I say for my understanding point of view, it will be 0 to 255. Okay, but 0 to 255 number are represented in hexadecimal or in binary in this fashion. Okay, so that fashion I am giving you. So last lecture I told you that series. So if I have total 256 number, then I will divide this 256 number into two sections. I will get near about 128 numbers in each side. Okay, I have total 256 number. Okay, so that's why this 256 number I divide it into two parts. So that's why I will get two separations. 128 bits are in first side, 128 bits are in second side. So that's why I say first 128 bits are coming under positive number series and another 128 bits are coming under the positive series. Sorry, negative series. Okay, so there is a separation between the positive and negative numbers. So here
we will do the sharing, we will do the dividation between the positive and negative number. So that's why if I say my series is starting from 0 and end it up to 127, so that's why total I have 128 numbers. So that's why this 128 number I am representing you as a 0000 will be the binary representation of 0. Okay. Similarly, if I say 00000001 means it is very much equivalent to 1. ओके देखिए मैं बाजू में लिख रहा हूं इसलिए इसका ध्यान रखना. ओके बाइनरी नंबर इज दिस वन. ओके एंड दिस इज अ इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. ओके गेटिंग एवरीवन. जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर ये जो टोटल 8 बिट्स हैं ये हाईलाइटेड 8 बिट्स को मैं बाइनरी नंबर कहूंगा और जो यहाँ सेकंडली हाईलाइट कर रहा हूं 0 इट इज अ डेसिमल नंबर. Right? Similarly, 1 is in decimal, but its equivalent is binary. Okay? Now, if I write 2, so that's why 2 I can write as 00000010. Okay, so it is equivalent of 2. In the same fashion, my series will end at 127. So that's why I write here 127 as 0 1 1 1 1 1 1 1. It is equivalent of whom? 127. Getting everyone? So that's why मैं यहाँ पर जो यहाँ सीरीज जो बताए हैं यह सीरीज आपको यहाँ इस तरह यह डेसिमल नंबर रहेंगे. ओके सो दैट्स व्हाई ये आपको यहाँ पर ये डेसिमल नंबर बता रहे हैं. ओके और यहाँ पर ये जो सीरीज है ये सीरीज आपको बाइनरी नंबर की सीरीज बता रहा हूं. ओके अभी इस सीरीज में पॉजिटिव नंबर्स. ओके जो पॉजिटिव नंबर्स है वह पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर 0 के द्वारा इंडिकेट किए गए हैं. ये 0 आपको यहाँ पर इस से 8 बिट पर प्रेजेंट रहेगा. ओके ये 0 यहाँ पर ये 8 बिट पर प्रेजेंट रहेगा. सो दैट्स व्हाई मेरे यहाँ पर जो सीरीज है वह सीरीज में जो लास्ट बिट है वह इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव नंबर्स. ओके लास्ट लेक्चर मैंने यहाँ पर आपका एंड कर दिया था. लेक्चर एंड हो गया था यहाँ ये बताना मेरा अधूरा रह गया था. सो दैट्स व्हाई इन कंटिन्यूएशन विद दिस लेक्चर ओके शायद आपको यहाँ कंटिन्यू हुआ है. ओके अभी इसी के साथ यहाँ पर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. आगे यहाँ पर मुझे अगर निगेटिव नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है सो दैट्स व्हाई I will show you here the remaining numbers. Okay means from 128. Okay from 128 to 255. Okay this much will be series in my hand. So that's why I will say this series is belongs to negative numbers. Okay so that's why here if I write this number 128, 128's equivalent binary number is 100000000. अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर में भी पुट आउट करके देखोगे तो आपको 100000000 का बाइनरी का इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट डेसिमल आपको 128 वहां पर आएगा. ओके सिमिलरली इफ आई राइट 100000001 okay it is equivalent of whom 129 and so on. If I write last number that is 1111 okay it is equivalent of 255. okay so that's why यह इस तरह का आपको यहाँ पर यह नेगेटिव सीरीज रहेगा. तो यहाँ मेरे पास जो नेगेटिव नंबर्स हैं वह नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं 1 के द्वारा. ओके यहाँ पर 1 यहाँ 8 बिट पर यहाँ प्रेजेंट है. ओके ये जो 8 बिट है ये इंडिकेट कर रहा है मुझे यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स. ओके
तो याद रखिए ये जो यहाँ जो सीरीज है, ये सीरीज अगर आप देखोगे ये कंप्लीटली ओके, ये जो रेंज है या ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है यह मैग्नीट्यूड है ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का ओके। सो दैट्स व्हाई ये मैग्नीट्यूड रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, और जो आखिरी 8 बिट रहेगा वह इंडिकेट करेगा वेदर it is 0 or 1. If it is 0 it is positive number, if it is 1 then it is negative number okay। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है यह आपका डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। गेटिंग एवरीवन ओके। तो जनरली यहाँ एक क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि भी यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग में अगर एक ही बिट के द्वारा अगर हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था तो मैं वह आंसर दे रहा हूं, क्या मैं स्ट्रिंग डिफाइन करते समय सिंगल बिट यूज कर रहा हूं तो सिंगल बिट 0 या 1 वह नेगेटिव या पॉजिटिव बिट इंडिकेट कर रहा है, तो फिर सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में वहां पर 8 बिट क्यों रिक्वायर्ड है। रिमेंबर आप सी प्रोग्रामिंग करो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करो या फिर आप आगे कोई फर्दर हायर एंड की लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करो, नो डाउट, बट रिमेंबर हम यहाँ पर जो बाइनरी बिट्स के लिए रिलेटेड बात कर रहे थे वह बाइनरी बिट्स के रिलेटेड यहाँ पर हमने बात की। तो जनरली whenever you are going for high end level languages, that time 0 to 255 numbers are represented in ASCII form okay। ASCII कोड में वहां पर ASCII चार्ट रहेगा ओके, ASCII चार्ट यहाँ पर आपको यूज करना रहेगा और वह ASCII चार्ट में आपको 0 to 9 नंबर्स ओके, सिमिलरली कैपिटल A to Z नंबर okay, small a to Z number, similarly symbolic representation, semicolon, commas, colon, single quote, double quote, slash, backslash, everywhere okay, everything okay, that will be represented in okay 8 bit only। So that's why in terms of high end languages only 8 bit space is required okay, only 8 bit space is required for that bit holding, for that data holding okay। So that's why here आप अगर कोई प्रोग्रामिंग अगर आप कोई स्ट्रिंग अगर ले रहे हो तो स्ट्रिंग में भी वहां पर आपका डाटा सीक्वेंशियल मेमोरी में स्टोर होता है और वो सीक्वेंशियल मेमोरी में स्टोर होकर वहां पर एक लोकेशन, एक सिंगल लोकेशन 8 बिट का इंडिकेट किया जाता है ओके, और वह 8 बिट का सिंगल लोकेशन वहां पर इस पर्टिकुलर ASCII कोड को वहां पर होल्ड करता है और उसके द्वारा प्लस या माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो वह कोड 8 बिट का कंसीडर करके वहां पर वह स्पेस ऑक्युपाई होती है। गेटिंग दिस पॉइंट्स ओके। नाउ आई थिंक दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू ओके। So I hope now to continue with the signed and unsigned number, again I am going for the further points okay। So the further point that I would like to discuss with you like this. Now I hope last lecture I shown you here how to understand the positive and negative number with the help of sign magnitude representations okay। Now here next point that I have shown here, the representation of sign binary number okay। तो sign binary numbers में यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं मैंने, +18 -18। So that's why the magnitude will be same but the sign will be changes। So that's why 0 is used for plus and 1 is used for minus okay। I think I'm ending this point here because many times I did repetition of these points okay। If you have any doubt okay, you can ask me very freely, no problem। But now
again, along with this point, in connection with this point here, I tell you here, there are three types of representations. Okay, whenever I go for the representations of numbers, okay, sign binary numbers, in our programming also, we need these particular things. Okay, so here it is must to represent the sign binary numbers. Okay, so that's why there are total three forms are popularly adopted. First one is sign magnitude form, second one is ones complement form, and third one is two's complement form. Okay, now here we will understand here the ones complement and two's complement form. Okay, so here in case I have a number, okay, so here I am just scratching this. If I say I have a number, okay, that is 64. Okay, so if I write 64 in a binary, okay, so that's why when I write it into the form of binary, that time remember I convert that number into the its equivalent binary. Okay, so that's why when I convert, I go for dividation this number by 2 and I will get a binary number. So I'm telling you here by the another easiest method that I have. Okay, that method is by writing its power level. Okay, so I have a power of binary. Okay, that is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, what I written here, these are the total 8 bits. Okay, so this total 8 bits I have written here. Okay, so here 2 raised to, okay, if I write here 2 raised to, okay, so that's why 2 raised to all these bits. Okay, so that's why 2 raised to 7, 2 raised to 6, 2 raised to 5, 2 raised to 4. Okay, so that's why I will get here 2 raised to 7. Okay, like this. So that's why I write 2 raised to 7 as a 7. Okay, similarly 6, 5, 4, मेरे पास 2 रेस टू लिखने के लिए यहाँ पर वैसा कंपैटिबल टूल नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं इसे इस तरह इस फॉर्म में लिख रहा हूँ. ओके, सो दैट्स व्हाई 2 रेस टू 7 means here it is equivalent to 128. I hope you got this. 2 रेस टू 7 अगर मैं लेता हूँ तो 2 रेस टू 7 is 128. Similarly 2 raised to 6 is equivalent to 64. Okay. Similarly, 2 raised to 5 is nothing but 32. Okay. Similarly, 2 raised to 4 is equivalent to 16. Similarly, 2 raised to 3 is equivalent to 8. Similarly, 2 raised to 2 is equivalent to 4. 2 raised to 1 is equivalent to 2 and 2 raised to 0 is equivalent to 1. Okay, now if I want to write 64, okay, if I want to write 64, so that's why here I am placing these bits. Okay, so that's why at 128 it is 0, at 64 it is 1 because 64 is present. Okay, similarly 32 is 0, 16 is 0, 8 is 0, 4 is 0, 2 is 0 and 1 is 0. So that's why if you multiply 128 into 0, 64 into 1, 32 into 0, 16 into 0, 18 into 0, जैसा मैं बात कर रहा हूं वैसा वहां पर आपको अगर आपने क्लब किया तो you will directly get only 64. ओके, तो आपको यहाँ पर यह इक्विवेलेंट बाइनरी आपको 64 यहाँ पर मिलेगा. ओके, गेटिंग एवरीवन? So that's why this is my 64 number. Okay,
So now I am taking this 64 as a equivalent binary bits. Now what I want to say here, I am going to convert it into the equivalent ones complement. Okay, how you can find the ones complement? So that's why here I write 0100 0000 is my binary. Okay, is my binary number. Now whenever you want to find ones complement form, okay, so that's why for finding the ones complement, okay, you have to replace 0 as 1 and 1 as 0. Whatever 0 which we have, okay, in that earlier, that I replace it as a 1. Okay, similarly 1 is replaced as 0. Similarly 0 is replaced as 1. Similarly 4th bit is 0, that is replaced as 1. Similarly 5th bit which is present as 0 is replaced as 1. 1 1 1. Okay, this is the way of conversion of binary into equivalent ones complement form. Getting everyone? I hope you got the idea. Okay, तो यह मेरा यहाँ पर बाइनरी टू वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्शन इस तरह रहेगा. ओके, गेटिंग एवरीवन? हाँ, अगला लेक्चर किसका है आपका? सर अभी ब्रेक है सर. अच्छा ब्रेक है ना, मैं 10 मिनट ले सकता हूँ ना? यस सर. ओके ओके ओके, है मेरे पास बराबर प्रॉपरली 10 मिनट्स से आगे. ओके राइट, वेरी गुड. ओके, सो हियर व्हाट आई वांट टू से हियर, now in case if I have to tell about the ones complement form, okay, so that's why here I take positive numbers. Okay, wait, sorry. So for ones complement form, for taking ones complement form point of view, here what I said, how you can find the ones complement. So ones complement you can find out with the help of, sorry, how you can find out the ones complement. Okay, you can find out the ones complement by converting, by replacing 0 by 1 and 1 by 0. Okay, स्लाइड दिख रहा है आपको सभी को? ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूं हाउ यू कैन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट form conversion from negative to positive or positive to negative. Okay, so here consider a negative decimal number. Okay, initially we will consider here one decimal negative number, that is minus 108. Okay, minus 108 means here it has minus sign. Okay, it has minus sign. Okay, so that's why here we know 108's equivalent. Okay, 108 equivalent is 0110 1100. Okay, this is a 108 equivalent binary. Now if I simply convert it into the equivalent ones complement form, so that's why ones complemented form I will get like this. Okay, here 0 is replaced by 1, 1 is replaced by 0, so that's why I will get finally 100 100 11. Okay, so in this number here magnitude is 001 001 and 1. Okay, and lastly whatever that bit I left in the left hand side, that is 1. Okay, that indicate here a negative sign. Okay, that indicate here a negative sign, यानी यहाँ पर जो 1 यहाँ पर शो किया गया है वह 1 यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है. सिमिलरली मैं अपना एग्जांपल आपको शो कर रहा हूं, जो एग्जांपल में मैंने यहाँ पर बताया, अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पर कहूं, ओके, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि यह मेरा 64 है, तो ये 64 प्लस 64 है. ओके, दैट इज 64 is a positive number. Okay, so that's why when I convert it into the ones complement form, then that ones complemented form is minus 64. बात समझ में आई कि नहीं बोलो?
ओके, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो मैं प्लस साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूं, ये प्लस साइन यहाँ पर जीरो के द्वारा यहाँ पर बाइनरी ओरिजिनल नंबर में शो की गई है। ओके, तो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में यहाँ पर इस तरह 64 का जो साइन है वह रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर लेना चाहता हूं, तो मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया इसको, मैंने इसे बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आई विल गेट अ नेगेटिव नंबर, सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव नंबर इज लाइक दिस। तो मुझे नेगेटिव नंबर इस तरह मिला, तो नेगेटिव नंबर में यहाँ साइन रहेगी 1। ओके, गॉट इट एवरीवन? ओके, तो इसी फैशन में मैं वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जैसे बताया, तो वैसे ही मैं यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी जा सकता हूँ। तो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आपको यहाँ पर कैसे करना है, whenever you want to find out the two's complement of a number, then two's complement of a number will be obtained by adding 1 in the ones complement form. ओके, आपको 1 ऐड करना रहेगा टूस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो मैं यहाँ जो वंस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर है, वह वंस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर में जस्ट मैं अगर 1 ऐड कर लू, एक सेकंड, ओके, अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर लू, okay, so that's why I will get here the result. Okay, I will get the result as a 1 plus 1. Okay, when I do 1 plus 1 in binary, I will get result 0 and 1 will be carry. Okay, I hope getting everyone. So that's why I'm keeping this 0 here in this place. So that's why it is 0 and here 1 will be carry. Okay, 1 will be carry which is forwarded with the another next one bit. Again 1 plus 1 result will be 0. Okay, and 1 carry will be forwarded. Again 1 plus 1 will be 0 and 1 carry is forwarded. Okay, 1 plus 1 again it will be 0, 1 carry is forwarded here. Okay, again 1 plus 1 will be 0. Okay, again 1 carry will be forwarded, 1 plus 1 will be 0 and 1 carry is forwarded. Now the above, the earlier, the ones complement is 0. Now 0 is added with 1, you will get result as 1. Okay, but now carry is not generated, so that's why I say carry is 0. I forward 0 as a carry. Now that carry is added with this 1. Okay, you will get result as a 1. Okay, so this will be your two's complemented form. Okay, this is your two's complemented form. Okay. Okay, so that's why this is my two's complemented number. In this number, I got 1, 1, 0, 0, 1, sorry, 0, 0, 0, 0. Okay, so that's why this particular binary stream is getting, and in this binary stream, this will be your magnitude and this will be your sign. Okay, so that's why here the last 8 bit is telling here the sign and it is 1. Okay, so that's why this one is showing here in two's complemented form, it is negative. Okay, and its magnitude will be here 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, so this is about the two's complemented form. Okay, so that's why that two's complemented form negative numbers you can find as I have given you example. Okay, the same example is not given here, the example is given with 108, but I have already given you one example. Okay, I think this will be enough for your understanding point of view. Okay, getting everyone? Yes, sir. Okay, okay. Wait.
Wait a second. I just capture the attendance. Okay. Yes, any doubt? Yeah. Okay. No problem. So I hope you got the idea about this. Okay, in the next lecture, I will go for the fractional representation of number. एक 5-10 मिनट में उसको खत्म करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे रिकॉर्डेड डेसिमल में. So thank you very much for attending my lecture. Okay. आप shoot out कर सकते हो. Thank you very much. You can attend the next one lecture. Thank you. Thank you.